Hey guys, welcome to another session of the Victory. This is Nandita Arora, and today we will discuss about insulin and the formation of insulin and the relation of C-peptide with that. So let's start. So insulin plays a very important role in our body in the respect of diabetes mellitus, whether it is type 1 diabetes mellitus, whether it is type 2 diabetes mellitus. तो आज के सेशन में we are going to discuss two important things. First, जो पेशेंट्स मुझे देख रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको डॉक्टर हमेशा ये बोलता है कि आपको शुगर का टेस्ट एक खाली पेट करवाना है. दैट इज यू हैव टू गिव योर सैम्पल एम्प्टी स्टमक एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कम बैक होम, ईट योर मेडिकेशन, हैव योर फूड एंड आफ्टर 2 hours you have to give the sample again. So what is this thing that you have to give the sample after 2 hours only? So what is this basically? So we have a science behind it. क्यों ये 2 घंटे ही बोला जाता है? क्या 2 घंटे के पहले अगर सैंपल दे दिया तो एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं आएगा? क्या डॉक्टर अगर 2 घंटे की जगह 4 घंटे हो गए तो एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं आएगा? सो विल लुक इनटू ऑल दीज आंसर्स टुडे. एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी, द इंटर्न्स, माई कोलीग्स, माई सीनियर्स, माई जूनियर्स, उनके लिए टेक होम मैसेज जो है वो सी पेप्टाइड के इंपॉर्टेंस के ऊपर होगा कि हाउ यू कैन actually remember the approach to your oral medications, or you have to give insulin and when to start insulin injections in a patient. So let's start. So the first step in the formation of insulin is the site. So the site is in the nucleus of the beta cells of pancreas, that is islets of pancreas. So in the beta cells, इन दी न्यूक्लियस, सेल के अंदर भी न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है. सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स इन दी बेसिक ह्यूमन सेल. तो उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर द स्टेप 1 अकर्स. तो वो स्टेप 1 में क्या है? इट इज़ अ जीन ट्रांसक्रिप्शन. सो वहाँ पे जो जीन्स हैं दैट इज इन द आईएनएस क्रोमोसोम 11. सो देयर इज अ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स टू द एमआरएनए प्री प्रो इंसुलिन इज फॉर्म्ड. सो व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स थिंग दैट आई हैव टोल्ड? इट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जो कि हमने बहुत क्लास 12th बायोलॉजी का बेसिक है ये. सो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्या फ़र्क है? ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस जिसमें देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए. दैट मीन्स a non-bounded RNA is formed, whereas in the process of translation there is always the outcome of a protein formation. तो अभी first step हमारा क्या हुआ न्यूक्लियस के अंदर? that is the transcription. So there is a gene on chromosome 11. So that INS gene, there is a transcription in that gene and वहाँ से प्री प्रो इंसुलिन बन जाता है. Now this प्री प्रो इंसुलिन जिसकी मैं बात कर रही हूँ ये एक्चुअली दिखता कैसा है? what is the composition of it? तो ये जो प्री प्रो इंसुलिन है it has 110 amino acids. So it is a long chain of polypeptide transcription होने के बाद, so it is a long chain of polypeptides which has 110 amino acids. So after the gene transcription, then there is a translation that takes place. So second step is translation. So in the rough endoplasmic reticulum, now when transcription has taken place in the nucleus, now that pre-pro insulin is shifted to the rough endoplasmic reticulum, and in that rough endoplasmic reticulum translation takes place. Now when that translation takes place, there is a pre-pro insulin formation. Now this structure of pre-pro insulin is, सबसे पहले एक लीडर है जिसको सिग्नल पेप्टाइड बोलते हैं. After that signal peptide is a B chain, then C chain and then A chain. You can remember it like Bachelor of Commerce and Arts. तो B, C and A. So लीडर चेन है, B चेन है, C चेन है और A चेन है. ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है? इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो साइट 1 वाज न्यूक्लियस, साइट 2 इज द रफ एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस रेटिकुलम, राइट? नाउ दिस सिग्नल पेप्टाइड रिमूवल इज द नेक्स्ट स्टेप. सो व्हेन दिस लीडर chain, that is before the B, C and A chain, we have a signal peptide. Now signal peptide removal is that signal peptidase enzyme will come in the rough endoplasmic reticulum and it will cut down the leader chain. So leader chain जब cut हो जाएगी तो we are left with B, C and A chain. Now what would be the next step? Now when the translation has taken place, there are some chaperone proteins formation. So वहाँ पे जो rough endoplasmic reticulum है वहाँ पे कुछ chaperone proteins का formation होता है. Now these chaperone proteins, they help in the formation of disulfide bonds. तो अब सिग्नल चेन साइड हो गया तो अब B, C और A के बीच में there will be the formation of disulfide bonds. Now disulfide bonds जैसे ही बन गया, so this is a signal कि अब इसको यहाँ से हमें Golgi apparatus में भेजना है. तो which is the next place that it will go? That is the Golgi apparatus. Folded and insulin by the disulfide bonds from the rough endoplasmic reticulum, it goes to the Golgi apparatus. Now in the Golgi apparatus there are secretory granules. Golgi apparatus is very famous for the secretion and the storage process that we have learned in our 12th basic
थिंग्स, राइट. तो जब ये प्री प्रो इंसुलिन के डाइसल्फाइड बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स सिग्नल चेन जब उसकी टूटी तो उसका नाम प्रो इंसुलिन हो गया. पहले जब सिग्नल चेन था, बी, सी और ए चेन था, उसको पॉलीपेप्टाइड चेन को हमने बोला प्री प्रो इंसुलिन. आफ्टर दैट इट कम्स टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वहां पे आके उसकी सिग्नल पेप्टिडेज एंजाइम जो है वो सिग्नल लीडर चेन उसकी काट देती है. नाउ वी आर लेफ्ट विद बी, सी एंड ए चेन. नाउ दिस इज कॉल्ड एज proinsulin. Now this proinsulin has a disulfide bond formation and it gets transported to the Golgi apparatus of the cell. Now in this Golgi apparatus we have secretory granules, and in the secretory granules the work of secretory granules is storage, राइट. तो यहाँ पे इनका स्टोरेज हो जाएगा, राइट. तो अब गोल्जी अपरेटस में इनको मिलने कौन आएगा? कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम. नाउ दिस कार्बोक्सी पेप्टिडेज वो पूरी कार लेके आएगी गोल्जी अपरेटस में. क्यों लेके आएगी? क्योंकि उसको सी पेप्टाइड को अपने साथ लेकर जाना है. तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम विल कम एंड इट विल गेट अ रिएक्शन विद दिस प्रो इंसुलिन एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी चेन एंड दूसरी साइड फ्री सी पेप्टाइड. तो फ्री सी पेप्टाइड को अपनी कार में ले जाएगी कार्बोक्सी पेप्टिडेज, और जो हमारी ए और बी चेन है वो बच जाएगा. दैट इज द इमेच्योर इंसुलिन दैट विल बी स्टोर्ड इन द सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स. एंड एज द टाइम परसिस्ट, जैसे ही ग्लूकोज अपटेक करने का इनिशिएशन आएगा बॉडी से, जैसे ही ट्रिगर आएगा, सो इट विल गो टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाया द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस. इट विल फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आफ्टर दैट वो बाहर जाके it will start doing its process. But इसमें this was the whole thing of insulin. Now when it will fuse with the plasma membrane, this immature insulin will be converted into the mature granules, and in the going for the work of the uptake of glucose, the mature insulin will be produced. So this is the happy birthday to you, happy birthday of insulin has been done, right? So this birthday of insulin has been done. Now what was that free C peptide? जो carboxy peptidase enzyme ने free C peptide को काटा. Is there any clinical relevance? Yes, there is a huge clinical relevance of this C peptide. खुद सोचो, जितना ज्यादा इंसुलिन बनेगा उतना ज्यादा कार्बोक्सी पेप्टिडेज उसको कट करेगा और सी पेप्टाइड बाहर निकलेगा. दैट मीन्स द इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो इट मीन्स अगर हम कोई रिपोर्ट में सी पेप्टाइड को ज्यादा देख रहे हैं, दैट मीन्स इंसुलिन बॉडी में ज्यादा बन रहा है. दैट मीन्स बीटा सेल जो है पेनक्रियाज के जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा काम कर रहा है. सो ये पूरी प्रोसेस इज फास्टेंड. सो दैट इज द रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हायर लेवल ऑफ सी पेप्टाइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंडोजीनियस इंसुलिनोमा. That is the diagnosis. If the C-peptide is greater than the normal range, so we can diagnose it. We have a perspective of diagnosing it as endogenous insulinoma. And on the other condition, if this C-peptide is of the lower quantity, if it is of the lower range, so if it is low or maybe if it is absent, अगर C peptide है ही नहीं, if there is no C peptide in the body, that means there is no insulin production. And if it is low C peptide in the body, that means there is the less insulin production from the beta cells, which also indicates there may be any pathology in the pancreatic cells, there may be any pathology in the beta cells of pancreas or in the nucleus. So that means we have to diagnose that patient for type 1 diabetes mellitus, that is destruction of the beta cells and totally insulin is absent. So it is a very clinical relevant thing that we have to see in patient of diabetes before giving medicines, that when we have to start the insulin injections, whether it is type 1 diabetes mellitus, whether it is type 2, when we have to give the patient oral medication. और patients के लिए take home message क्या है कि whenever you do the fasting and PP of योर बॉडी, तो फास्टिंग हमेशा एम्प्टी स्टमक करना है एंड पोस्ट प्रैंडियल ऑलवेज एंड ऑलवेज गो आफ्टर 2 hours ऑफ ईटिंग, बिकॉज दिस होल प्रोसेस जिसमें इंसुलिन का बनना स्टार्ट होता है न्यूक्लियस से लेके गोल्जी अपरेटस से बाहर निकलने तक का जो प्रोसेस है इंसुलिन का, इट टेक्स 2 hours. सो दैट इज द रीजन माई डियर दैट वी टेल द पेशेंट्स कि आपको 2 hours के बाद ही वो टेस्ट कराना है, बिकॉज इंसुलिन का प्रोडक्शन जब होगा देन ओनली विल बी एबल टू नो व्हाट योर एक्चुअली बॉडी इज गोइंग थ्रू. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, stay healthy, stay happy.